Hello students, today we will learn chapter number 6 of class 6. Chapter name is hardware and software. But before we start our chapter, I request you to please subscribe my channel. To subscribe, click on the subscribe button and like the video. Now let's start the chapter. First we will discuss about what is computer. Computer is a type of electronic machine which stores data, uses it for future process and which can be programmed through instructions. Means कंप्यूटर एक इलैक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा ਨੂੰ स्टोर ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. Computer has two parts. First is hardware and second is software. Examples of hardware like CPU, mouse, keyboard and monitor. Same as examples of software, Paint, Microsoft Word, Microsoft Excel and PowerPoint. There are many other hardware and software, but important are all these. First we will learn about what is hardware. In the computer world, hardware refers to the physical components like keyboard, mouse, printer, monitor that make up a total computer system. Input is feed and output is received through hardware. Data is stored and processed on hardware. Hardware can be touched and sensed. Means कंप्यूटर ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਭੌਤਿਕੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਮੋਨੀਟਰ. ਇਨਪੁਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਾਈਕ CPU, keyboard, mouse, monitor and all these parts make a total computer system. Now there are features of hardware. First is we can touch it, मतलब ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. We can feel it, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. It occupies space, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦਾ ਹੈ. We can process and store data on it, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Now, what is computer case? The computer case, also known as computer chassis or system unit or cabinet. It is usually made up of plastic or metal box that contains the computer's main parts such as motherboard, hard drives, etc. देखो पिक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ CPU ਦਾ front part ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੈਕ ਪਾਰਟ. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਮਦਰਬੋਰਡ. The motherboard is a sheet of plastic that holds all the circuitry to connect the various components of a computer system. Means ਮਦਰਬੋਰਡ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜੋ ਮੇਨ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ. ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ or you can say hard disk. It is the main storage device that permanently stores all the data on the computer. It has many parts like platter, spindle, head.
Next is video card. Video card is the device in a computer that outputs visual information to the monitor. Means video card किस लिए जरूरी है? अपने monitor दे ऊपर output नू देखन लई. Next is processor. Processor is the main part of the computer system which carries out the instructions of a computer program by performing the basic arithmetic, logical, control and input-output operations of the system. It is also called brain of the computer system. Next is fan. Every computer has a cooling fan designed for primarily to prevent the CPU from overheating. Cooling fan may bring cool air into the computer cabinet and draws hot air. Means CPU ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ CPU ਦੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Same as our AC. Next is RAM. RAM is a type of data storage used in computers that is generally located on the motherboard. This type of memory is volatile and all the information that was stored in this memory is lost when computer is turned off. Means RAM की है रजे एक storage device है जिस दे विच सारा डाटा स्टोर किया जाता है ते यह कित्थे लगदी है मदरबोर्ड दे विच. यह वोलाटाइल मैमरी है. वोलाटाइल मीनस की हुंदा है जे जदों लाइट ऑफ हो जाती है ते तुहाडा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इस विच जो डाटा पिया हुंदा है वो सारा की हुंदा है की हो जाता है जे खत्म हो जाता है. Next is power supply. It is a component that supplies power to a computer. It is also called switched mode power supply and short form is SMPS. Power supply ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Next is CD-ROM or DVD-ROM. It is used to run CD or DVD in the computer. रजे जिस ड्राइव दे विच आप अपनी CD या DVD नू पाने आ उस नू कहंदे है CD या DVD ROM ते यह किस काम लई आंदी है CD या DVD नू चलान लई. Next is important points for taking care of hardware. If different components of computer are not properly looked after, they get spoiled very soon. Following points should be kept in mind while handling hardware. Means अगर आपां कंप्यूटर दे हिस्सियां दा प्रॉपर ध्यान ना रखिए तो वह बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे. उन्हां नूं खराब होने तो बचाने लई आपां नूं हेठ लिखे पॉइंट्स नूं ध्यान विच रखना चाहिदा है. First is we must keep all the parts of computer clean. कंप्यूटर दे सारे हिस्सियां नूं साफ रखना चाहिदा है. We must cover it after use. जदों कंप्यूटर नूं चला खत्म करिए उस तो बाद इस नूं कवर कर देना चाहिदा है. We must not pull cables of computer parts. कंप्यूटर दे जो तारां हुंदियां उन्हां नूं खिंचना नहीं चाहिदा. Next is we must press कीबोर्ड कीज जेंटली. कीबोर्ड दे जो कीज हुंदी हैं उन्हां नूं बहुत ही आराम नाल प्रेस करना चाहिदा है. नेक्स्ट इज वी मस्ट नॉट ईट एनीथिंग इन द कंप्यूटर रूम. कंप्यूटर रूम दे विच आपां नूं कुछ भी नहीं खाना चाहिदा. वी मस्ट कीप हार्डवेयर प्रॉपरली. कंप्यूटर दे सारे हिस्सियां नूं बड़े ध्यान नाल रखना चाहिदा है. वी मस्ट हैंडल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इन ए प्रॉपर वे. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. We must use a soft cloth or brush to clean computer.
कंप्यूटर नू साफ करन लई बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े या फिर ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिदा है। एंड नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? Software is a collection of programs that are stored and run on the computer hardware and helps user to work on the computer. Software is a program used in a storage device. You can make a software or you can get ready-made software from market like MS Word, games etc. मीनस सॉफ्टवेयर की हुंदा रजे प्रोग्राम्स दा इकट्ठ हुंदा है जिन्हां नूं कंप्यूटर हार्डवेयर दे उपर स्टोर किया जाता है ते चलाया जाता है। तुसी खुद दा सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो ते मार्केट विचों बनिया बनाया सॉफ्टवेयर भी खरीद सकते हो। तुसी कंप्यूटर दे विच माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच काम करदे हो, पेंट विच काम करदे हो, गेम्स खेलदे हो, है ना। यह सारे की हुंदे है सॉफ्टवेयर like Paint, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. These all are the examples of software. Next are features of software. What are the main features of software? First is software has no weight. Means software da koi par nahi hunda. We cannot touch it. ਆਪਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਲਪਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੂ ਵਰਕ। ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। These are costly। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। A group of instructions is known as program, but a group of programs is called software। लाइक देखो तुसी डायग्राम दे विच देख रहे हो इंस्ट्रक्शंस नू इकट्ठा किया एक प्रोग्राम बन गया ते प्रोग्राम्स नू इकट्ठा किया की बन गया सॉफ्टवेयर। और यू कैन से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन सॉफ्टवेयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। First is system software and second is application software. First we will discuss about system software. What is system software? System software is defined as a collection of programs that control the operation and internal working of the computer system. It reads data from input devices and transfers the processed data to the output devices. It plays an important role in computer. We cannot take any work from computer without it. Means system software की हुंदे रजे जो कि प्रोग्राम्स दा इकट्ठ हुंदे हन ते कंप्यूटर दी प्रॉपर वर्किंग लई उस तो काम करवाने लई जरूरी हुंदे है। ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Now features of system software. What are the main features of system software? First is these are very costly. बहुत महंगे ਹੁੰਦੇ ਹੈ। It is difficult to generate system software. अगर ਆਪਾਂ सोचे कि ਅਸੀਂ खुद system software बना लांगे ਤਾਂ नहीं, system software बनाने बहुत मुश्किल ਹੁੰਦੇ है। It is complex and it can be developed by an expert only. मतलब बहुत मुश्किल ਹੁੰਦੇ है ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ expert ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। A computer system cannot work without it. कंप्यूटर सिस्टम जो है इन्हां दी मदद तो बिना काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर एन इम्पॉर्टेंट टास्क। These are set of programs developed by programmers to order, perform specific type of jobs like
creating the documents, making calculations, preparing results and reports. System software is the need of every computer, but application software is not need of any computer. Means जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है राजे वो एक इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इन्हां दी जरूरत उदों पैंदी है जदों यूजर नूं इस दी जरूरत होवे। ठीक है, लाइक किस काम लई? डॉक्यूमेंट्स बनाने लई, कैलकुलेशंस करन लई, रिजल्ट तैयार करन लई, रिपोर्ट्स तैयार करन लई। नेक्स्ट आर फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज इट डिपेंड्स ऑन यूजर रिक्वायरमेंट, मतलब ਇਹ ਇੱਕ यूजर ਦੀ रिक्वायरमेंट ਦੇ ਉੱਪਰ डिपेंड ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ यूजर ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇਟ ਇਜ਼ ਚੀਪਰ ਦੈਨ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਚੀਪਰ ਮੀਨਸ ਸਸਤੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਨ them। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਂਡ application software. First is system software is compulsory to operate a computer, but application software is not compulsory to operate a system. Means computer चलाने ਲਈ system software ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी मेड बाय एक्सपर्ट्स ओनली, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज वेरी सिंपल एंड अ पर्सन विद लेस एक्सपीरियंस कैन मेक इट। मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत मुश्किल हुंदा है, इसनू बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन बना सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सिंपल हुंदा है, इसनू घट अनुभव वाला व्यक्ति भी बना सकता है। इट इज एक्सपेंसिव, इट इज लेस एक्सपेंसिव। मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत महंगे होंगे हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर घट महंगे होंगे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद हार्डवेयर, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद हार्डवेयर। मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नाल सीधा संपर्क करते हैं, पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नाल सीधा संपर्क नहीं करते। सिस्टम सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर विंडोज, यूनिक्स, all these are operating systems, and examples of application software are MS Word, MS Paint, etc. Now, what is relation between system software and application software? For a computer to produce useful output, its hardware and software must work together. Hardware and software cannot work properly without each other. Means कंप्यूटर तो अगर काम करवाना है तो हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर नू मिल के काम करना पड़ेगा। हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर एक दूसरे तो बिना काम नहीं कर सकते। अगर इसके एग्जांपल्स देखिए तो एग्जांपल्स की होंगे हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर जरा जे देखो। सब तो पहली की है मोबाइल्स एंड मेमोरी कार्ड। मोबाइल्स एंड मेमोरी कार्ड्स आर हार्डवेयर, and all the songs and games in these mobiles or memory cards are. Next is ATM machines. ATM machines are hardware, but all these machines are given instructions to run, and all these instructions are called software. Without instructions, ATM machines cannot work. Next is washing machine. Washing machine is a hardware, but to wash and dry clothes, instructions are given to washing machines. If we don't give instructions, they won't work. So instructions are software. Or we can say hardware and software are required for proper functioning of computer system. Students, I hope you all like the video and understand what is hardware and software.
If you like the video, please subscribe the channel and like the video and share it with your friends. Thank you so much.